Hello guys, so now we are starting. So this is the doubt solving Saturday is the live one, and today we are gonna do quants and DI. Uh, Again, I had a few good doubts, and apart from that, I was strangely shocked that DI के ज़्यादा doubts नहीं थे. So I've put in two sets from my behalf only, and I hope you really like the sets. And apart from that, quants का question तो well, किसे quants नहीं पसंद? So yeah, we'll start with that. Just a minute. Please tell me when you guys can see my screen. Huh. Can you guys see my screen? Great. Chalo. So yeah, for all of you who are new to Doubt Solving Saturdays, this is basically a series that I've started where you guys can send me the questions and I'm gonna solve it using my tricks. Gajanan, I'll take all the doubts regarding preparation and everything at the end of the lecture after we're done with the sums. Okay? Chalo, let's start. So this is a very common CET-ish question. We have been told that there are two kinds of teas and they are mixed and sold at 40 per kg. The profit is 10% and A and B are mixed in the ratio 3:2 and 5% of this ratio is 2:3. The cost prices per kg of A and B are in the ratio dash dash dash. Now guys, understand this. First, I've taken the sum. This sum is a very classic example of, okay, how many of you are aware of my ABC categorization? So for all of you who aren't aware of it, A, B, and C. A, B, C category के questions. Every question that you see in CET will be divided in three categories. That is A, B, and C. This sum, although it seems A is abhi kar lo, B is बाद में करो, and C is छोड़ दो. A are the question जो 120 जितने questions A category के आते हैं, about 50 are B category questions, and 30 are C category questions. Now guys, understand why this categorization is very important. It's because you need to understand कि जो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस छोड़ देने हैं या फिर जो क्वेश्चंस बाद में करने हैं. These are the ones which will get you to any normal college. मतलब तुम्हें MET डालमिया वो सब चाहिए, IES चाहिए, तो इसके लिए A कैटेगरी वाले क्वेश्चंस बहुत है. तो फिर I guess you are at the wrong place. You are in the wrong webinar. If you are only aiming for a higher college like a Sydenham or a JBMS, then this webinar is for you. So basically, you must understand B category के questions are the ones which push your score ahead. जिसकी वजह से तुम्हें JBIMS मिलता है, JBIMS या Sydenham मिलता है. Sorry, B category is the one जिसकी वजह से तुम्हें Sydenham मिलता है. And C category is the one which differentiates every other student from a JBIMS student. C category are the questions जो तुम्हें immediately छोड़ देने हैं. C questions are the ones which take more time, which although for 1 mark का question will have much more calculation, and तुम्हें question को देख के 15-20 सेकंड तो बस question को समझने में चला जाएगा, solving तो छोड़ ही दो. ये वाले questions में main part ये है. Overall CET में देखो, तुम बोलो CET में कितने मार्क्स चाहिए JBMS के लिए? What do I always say? CET में कितने मार्क्स लाने हैं? 150. And CET में टाइम कितना होता है? 150 minutes. So on an average per question तुम्हारा 1 मिनट ही मिलता है. C questions are the types जो एक एक क्वेश्चन आराम से तुम्हारा 2-2.5 मिनट खींच लेता है या फिर 1.5 या 2 मिनट. Not worth it. जितना टाइम तुम C क्वेश्चन करने में डालोगे ना, तुम 2 मिनट डाल के एक क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे तुम 2 मिनट डाल के 2 क्वेश्चन करोगे. Solving C category questions is what brings your score down. उसकी वजह से तुम थक जाते हो, उसकी वजह से स्टैमिना कम होता है, एंड उसकी वजह से एग्जाम में स्ट्रेस बढ़ता है. एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाई यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट रिकॉग्नाइज ABC कैटेगराइजेशन सबसे पहले. दिस सम ऑल्दो इट सीम्स लाइक अ A कैटेगरी सम एट मैक्स, बट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट 10% ठीक है, चलो 10% प्रॉफिट है, मिल जाएगा कि चलो इसका दिस इज 11, तो इसको बाय 11 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा व्हाट इज द प्रॉपर is the first 2 question available on YouTube.
महेश, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, डोंट वरी. वो नंबर्स, दिस इज एज पर द स्टूडेंट्स हैव सेंट मी डाउट्स ना, तो मैंने सीधा स्क्रीनशॉट लगाया, मैंने उसका सीधा पिक लगाया है. Anyway, so make sure that you understand that this is a C category question. This is a question that is not to be solved. This is a question that is clearly a question that is not worth being solved. समझ रहे हो? Because there are not just one. देखो, तुम्हें प्रॉफिट की वजह से तुम्हें एसपी निकालना पड़ेगा. एसपी होगा दिस बाय 11. ऊपर से तुम्हें निकालना पड़ेगा कौन से रेशियो में है, एंड 5% अलग रेशियो, तो वो तुम्हें इसमें इंकलकेट करना पड़ेगा. एंड फाइनली तुम्हें कॉस्ट प्राइस ढूंढना पड़ेगा. For a sum for 1 mark, you are doing 4 or 5 calculations. Not worth it. So that is why this is a definite C category question. I wanted to take this in the start, so I have straight away, so I can easily explain the ABC categorization. Chalo. Now let's go ahead. Ninth one, like not ninth one, the second one. So now this is a very this is a sum that is very generally solved by a very basic method. तुम परसेंटेजेस निकालोगे, तुम एवरेजेस निकालोगे, या फिर जो भी है तुम रेशियोज देखोगे. नॉट नेसेसरी. इसका एक ट्रिक है. इसमें क्या दिया है, एक वाइन का कटोरा है, लेट्स कॉल इट कास्क को कटोरा बोलते हैं. उसमें जितना भी वाइन है उसमें से पहले मैंने 8 लीटर्स निकाला एंड बाद में उतना ही पानी भर दिया. बाद में वापस मैंने वो किया. आई डिड इट 3 more times. सो मैंने टोटल कितनी बार किया? आई डिड इट अ टोटल ऑफ 4 times. एंड फाइनली रेशियो ऑफ वाटर, वाइन इज टू वाटर कितना हो गया? इतनी बार मैंने किया कि उसका फाइनली जो वाइन इज टू वाटर था, टोटल पार्ट्स में से 16 पार्ट्स वाइन एंड 65 पार्ट्स वाटर. सो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स? हाँ गाइस, सौरभ, हाँ 81. दैट्स राइट. Hodor the half wit. Yeah, so you are right. Total 81 parts है. So always you will solve this sum by this method only. 16. And कितनी बार हमने मेथड को रिपीट किया? How many times did we repeat it? We repeated it 4 times. तो हम क्या करेंगे, इसका ओवरऑल 4th रूट ले लेंगे. ओवरऑल 4th रूट विल बी व्हाट? 2/3. एंड नाउ 2/3 को क्या करेंगे हम? नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड 2/3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 माइनस कितने लीटर्स निकाले या फिर कितना लीटर्स ऐड किया, जो भी, 8 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी. टोटल क्वांटिटी x लिख दो. दिस इज गोइंग टू बी योर मेथड. दिस इज इट. ये 4 बार किया तो मैंने इसका 4th रूट ले लिया. दैट्स इट. सो नाउ व्हाट इज दिस? 8 by x equals to 1/3. 8 equals to 24. Sorry, x equals to 24. That's your answer. This is a very short way of solving the sum. कोई भी सम ये मेथड पे हो जाएगा. ओके? जितनी बार हमने किया हम उसका उतना ही रूट ले लेंगे ऑफ द फाइनल क्वांटिटी. यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज दिस मेथड. यू गाइस लाइक इट? ये समझा सबको गाइस? Too many messages, everyone will get confused. Wait. Use this method always. Chalo, I'll move ahead. This is a very ये अनदर सम है जिसमें लोग बहुत ज्यादा मेथड लगाने की ट्राई करते हैं, पर इसमें जरूरत नहीं है. 2 stations A and B, 110 kilometer apart. One train starts from A at 7 a.m. and travel towards B at 20 kilometers per hour. Another train starts from B at 8 a.m. and travel towards A with a speed of 25 kilometers per hour. What time will they meet? कई सिंपल इतना समझो, ये पूरा डिस्टेंस है. 7 बजे वो निकलता है तो इधर 8 बजे पहुंचेगा, 8 a.m. एंड 8 बजे B यहां से निकलता है. तो दिस इज B, दिस इज A. ए यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है एंड ये 25 किलोमीटर से आ रहा है. मुझे देखना है कि ये दोनों कब मिलेंगे. व्हाट इज द टाइम व्हेन दे विल मीट? सो सिंपली यू कैन, वेरी सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज दैट 110 किलोमीटर में से इसने कितना ऑलरेडी किलोमीटर्स कर दिए हैं 1 घंटे में. ही लेफ्ट एट 7 a.m. ना,
सो बेसिकली इसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया बिकॉज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. तो बचा कितना? 90 किलोमीटर. सो यू कैन स्ट्रेट अवे से दैट 20, 25, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लोग आ रहे हैं. उस पे उसको 90 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स. तो 8 बजे के 2 घंटे बाद वो लोग मिलेंगे. दैट इज दे विल मीट समवेयर हियर at 10 a.m. Never in these sums are you supposed to solve by a basic method or by using any formulas or anything. Time speed distance में तो कभी भी फॉर्मूला नहीं लगानी है. You always have to solve time speed distance only by using pure simple logic. Yep. Now comes my favorite part, DI. I love DI and LR where most people are scared of DI and LR. I love DI and LR. So yes, let's go. Now guys, इसमें सिर्फ इतना समझो, दिस इज थ्री चार्ट वाले DI आ सकते हैं क्या? शुभम, यस, 3 चार्ट वाले भी DI आते हैं. इनफैक्ट आई हैड गॉटन वन डाउट, दैट वाज 3 पाई चार्ट्स. 3 पाई चार्ट्स को कंपेयर करना था. I also have taught my students how to do it. 3 पाई चार्ट दिए होते तो कैसे उनको कंपेयर कर करके सॉल्व करना है. There is a very good way of solving it. Here I've taken a easier one as compared to that. But yeah, 3 पाई चार्ट वाले भी आते हैं CET में कभी कभी. Most of the times it is 2 pie charts and 1 table. This is what comes in CET most of the times. So make sure that you are prepared with your DI very well. Okay, let's start. A percentage profit on pista. Always in DI guys, कभी भी है ना, सीधा क्वेश्चन देख. जब ऐसा टेबल तुम्हें दिया है ना, in a caselet based DI, make the table yourself. But when you are given a table like this, fill in the blanks wala DI fill in the blanks types, तब you are always going to solve the DI सीधा क्वेश्चन से. You are not going to actually pick up, like start solving everything by yourself. Okay. ऊपर से इसमें तुम देखो, देयर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग द प्रॉफिट लॉस और एसपी ऑफ द पिस्ता. दिस इज द फर्स्ट क्लू. तुम्हें उसका टोटल कॉस्ट पता है पर सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं निकाल सकते. मतलब इसमें क्वेश्चंस पे ही जाना पड़ेगा. तो हियर इट इज, द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन पिस्ता इज 5. व्हाट विल बी इट्स सेलिंग प्राइस? दिस इज प्रीटी इजी. टोटल कॉस्ट 1200 हो गया. 1200 पे 5% प्रॉफिट है. हाउ मच विल दैट बी? 1260. ये बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ही चिंती था. So now it gets fun. The selling price of groundnut is what percentage of the cost price of prune? Selling price of groundnut 2,750 is what percentage of the cost price of prune? इसका 500. Now you have to find 2750 is what percentage of 500 upon 500 into 100. सीधा cancel 550. अरे सॉरी, is the cost price of prune. अरे एक मिनट, ले लो चाहे. लॉस, ओ सॉरी, 1100 हो जाएगा. माय बैड. या इट्स 1100. सो 1100 से डिवाइड करना है. 1100. नाउ गाइस, नेवर आर यू एवर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉपरली. तुम्हें परफेक्ट कभी भी सॉल्व नहीं करना है. यू ऑलवेज हैव टू अप्रोक्सीमेट इट. अच्छा, इसमें तो सीधा सीधा आ रहा है, तो इसमें 250% डायरेक्टली आ गया. जब भी गाइस, वन इंस्ट्रक्शन दैट आई वांट टू गिव ऑल ऑफ यू, वन रूल दैट आई एम मेकिंग फॉर ऑल ऑफ यू, नेवर आर यू एवर गोइंग टू सॉल्व अ डीआई प्रॉपरली. एवरी डीआई हैज टू बी सॉल्व विद अप्रोक्सीमेशंस ओनली. मैंने इसके बाद वाला जो डीआई है उसमें बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन होगा. आई विल शो यू हाउ टू डू अप्रोक्सीमेशन आल्सो वेरी वेल. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लॉस ऑन एप्रिकॉट टू दैट ऑन प्रून? प्रून का लॉस 300 एंड एप्रिकॉट का कितना है? एप्रिकॉट का लॉस 5% लॉस है एंड ये उसका एसपी है. नाउ गाइस अंडरस्टैंड दिस. इफ दिस इज द एसपी, लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे? सीपी पे. एग्जैक्टली. सो हाउ विल यू फाइंड द सीपी ऑफ दिस? इफ दिस इज अ 5% लॉस, सो अगर ये कितना होना चाहिए? 95. इफ दिस इज 95,
तो 100 will be how much? Tell me, how much will be 100? या फिर हमें 100 भी क्यों ढूंढना है? लेट्स जस्ट फाइंड 5%. अगर हमें सिर्फ लॉस ढूंढना है ना, तो लेट्स जस्ट फाइंड 5%. तो हम क्या करेंगे? बोलो जल्दी. इसको सीधा 19 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. 19 and 50 कितना हो जाएगा? Wait, I guess I'm screwing up somewhere. Wait, we'll start off. Start से हम वापस करेंगे. I'm sorry, I screwed up somewhere. Guys, is the screen visible? Sony just said that screen is not visible. Is the screen visible to everyone, guys? Sony, please just check your connection. I guess there is some issue with your connection. The screen is visible to everyone else. Okay? Sony, please just check. Yeah. So what is the ratio of the loss on apricot to that on prune? So ये देखो, हमें इधर 300 दिया है. So this will be 300 is to something. So sorry, something is to 300. And what is the ratio of loss on apricot? तो apricot पे loss ढूंढना है. So apricot पे loss कितना हो जाएगा? That will be 5% of whatever this is amount. This is 95. 95 is 5000. तो हमें 5% ढूंढना है. So 5 into 5000 divided by 95. And इसका ratio is to 300. Because this is to 300. हमें सिर्फ ratio ढूंढना है. So we don't even have to actually find the entire thing. So हम सीधा क्या करेंगे? 250 is to 95. Sorry, 250 is to 3 into 95. So that is what we will do. 250 is to 95 into 3. So that is upon 19. And this will be 50. Now guys, understand this. हमें simply मिल गया 50 divided by 19 into 3. 19 into 3 is how much? 19 into 3 is 57. समझा गाइस सबको? Did everyone understand, guys? So yeah, that's it. Let's move ahead. Apricot to that on to, yeah, सही है अपना. Let's move ahead. Fourth one. What is the difference between the selling price of raisins and that of groundnut? SP of raisins हमें कहाँ से मिलेगा? Transportation cost and 7% profit है. So 64 into 7. 64 into 7, 420, 420, 28, 468. 468 the profit on raisins. Oh sorry, वो loss में लिख दिया मैंने. That is in the profit. Nishit, no, Nishit, वो सही था. That's wrong. And what is the difference between selling price of raisins and groundnut? Groundnut का selling price ढूंढना है. तो इसको 6400 so 6868 कर देते हैं. And इसका क्या आ जाएगा? Profit 250 to 2750. Now guys, understand, you don't even have to solve a lot. ये 4000 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, right? This is more than 4000 और लास्ट में 8 आएगा. कितना ज्यादा है ये सीधा 4000, so this is more than 4000 for sure. बाकी कितना बच गया? 118. समझ रहे हो गाइस? या 448 आएगा इधर एंड इधर 448. तो कितना बच जाएगा? दिस विल बी 98 ऐड हो जाएगा. So how much will it be, guys?
98 ऐड कर देंगे बस, दैट विल गिव अस आवर आंसर। समझे गाइस? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है ये, इसलिए मैंने एक थोड़ा इजी वाला लिया है। नेक्स्ट वाला बहुत मस्त सम है, आई रियली लव दैट सम। इफ द लॉस ऑन पिस्ता इज 10%, 10% लॉस है, then what is the percentage, then then its selling price is what percentage less than the selling price on raisins? raisins का selling price मुझे पता है कितना हो गया, 6648, ये हमने अभी देखा, सॉरी 6848, एंड इसका सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना है कितना हो जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस, नाउ वी नो दैट दिस इज ऑन अ लॉस, 1200 में उसने लॉस किया, 1200 में 120 लॉस, सो 1080, 1080 is what percentage less than this one? कितना कम है गाइस? हाउ मच इज इट लेस? हाँ, हाउ मच लेस इज इट? नंबर्स वाइज देख लो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5800 जितना, 5800 अप्रोक्सीमेटली। सो व्हाट विल डू इज दैट 5800 डिवाइडेड बाय 6800, which will be approximately 5 by 8, sorry 5 by 6, 5 by 6 से थोड़ा ज्यादा। Now guys tell me, इससे सबसे नजदीक वाला कौन सा है अपना रेशियो? What is the nearest ratio to this? What is the nearest ratio? Exactly. So this will be our answer. And see, it's fine. So what I'm saying is, देखो अगर मैं एक्चुअली कैलकुलेट करने बैठता तो मुझे सही आंसर आ जाता, लाइक फॉर श्योर आई वुड हैव गॉटन 100% राइट आंसर। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, sometimes especially in CET all the time, being right is not the most important thing, being fast is the most important thing। समझ रहे हो मेरी बात? इट्स फाइन इफ 5 में से एक क्वेश्चन रॉन्ग चला गया, चलेगा। 5 में से एक क्वेश्चन तूने सी कैटेगरी बना के छोड़ दिया, चलेगा। बट यू कैन नेवर बी स्लो इन सीईटी, दैट इज समथिंग दैट इज अ थंब रूल, वो सीईटी का सबसे बड़ा रूल है। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन, so we also have Twinkle. Hi Twinkle, it's nice to see you here. You guys, Twinkle is one of my really good students, really good. Yeah, chalo guys, this sum, what is the average mark scored by all students in physics? हमें सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, तो लाइक परसेंटेजेस दिए हैं, एंड ये आउट ऑफ कितने हैं उतना ही दिया है बस। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन फिजिक्स? गाइस एवरेज मार्क्स ढूंढने के लिए मुझे सबके मार्क्स ढूंढने की जरूरत है क्या? मुझे सबका परसेंटेजेस दिया है, डू हैव टू फाइंड द एवरेज परसेंटेजेस ऑफ ईच एंड एवरी वन? डू वी हैव टू फाइंड द मार्क्स ऑफ एवरीवन गाइस? बोलो। नो, वी डू नॉट हैव टू फाइंड द मार्क्स ऑफ एवरीवन। मुझे क्या बोला है? एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल इन फिजिक्स। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, एवरेज परसेंटेज ढूंढूंगा एंड वो एवरेज परसेंटेज देख लूंगा कितने मार्क्स होते हैं। एवरेज ढूंढने का भी तरीका है गाइस, अज्यूम एन एवरेज। इसका तुम अंदाजे से बोलो कितना एवरेज हो जाएगा, अंदाजे से कितना आ जाएगा एवरेज? आई एम सेइंग अप्रोक्सीमेटली 70 आएगा एवरेज। ओके, सो व्हाट विल डू इज दैट, हम सबके डिफरेंस ढूंढेंगे 70 से कितना है। +14 -2 +12 +14 +14 माइनस कितना हो गया, -22, सो -8 -8 0 -8 एंड ऊपर से ये और कम हो जाएगा, -14 हो जाएगा। -8 -14 इज -22, सो -22 को हम कैसे करेंगे? और ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, ये +14 ये -14 तो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये +2 एंड ये -12 -2 -14 एंड ये कितना आ जाएगा, -14 एंड +2 दैट्स -12, सो -12 आ गया। -12 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 2 एंड माइनस है ना, सो व्हाट विल डू इज दैट विल 70 जो हमने एवरेज लिया था उसमें से 2 माइनस कर देंगे, सो 68 इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई डू इन द एवरेज वाला मेथड? हाउ डिड आई टेक द एवरेज? तुम लोग को समझा? This is a very quick way of finding averages. Great. I've also explained this method very in depth in
in my DI के lectures. This is something that is very important. So also in my averages का lectures. So guys, please go through my मैंने averages का मेरे ख्याल से YouTube पे वीडियो भी डाला है, so you can go through it to get a proper answer. Now all you have to do is find 68% of 75. 68% of 75 कितना आ जाएगा? That is 70% से थोड़ा कम. That is a little less than 70%. This is approximately 48 के आजू बाजू आना चाहिए. So we can do this. 47.5. 48 से थोड़ा कम हो जाएगा. So this will be your answer. Guys, the most important thing in this question is approximation and averages. These are the two most important parts here. Okay. What are the total marks scored by student F in all subjects? Amazing question. अब guys देखो, बहुत ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूँ. ये दोनों 75 में से है ना. These both are out of 75. So I will find an average. कि इन दोनों का average कितना है? 56, 66. How much is the average? 56, 66 का average कितना? 61. Exactly. So this is basically 61 out of 150. ध्यान से सुनो. 61 out of 150. उसको approximately 61% है out of 150. That is how you calculate. If this is 61 and this is 66, तो अब इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 2.5 ऐड करेंगे. 63.5. 63.5 out of 300. That is how much. मैं इसको 300 out of 300 है, तो मैं क्या करूंगा? इसका ट्रिपल कर दूंगा. 189 plus 1.5, 190.5. एंड ऊपर से इन दोनों का देखेंगे, ये 50 आ गया, तो दिस इज 76% of 50, that is 38, and this is 55% of 200, that is 110. अब मुझे सिर्फ इनका एडिशन करना है, and that gives me my answer 8.5. 8.5 वाला एक ही आंसर है अपने पास, that is option E. समझा सबको कैसे किया मैंने? How did I do this so fast? Okay, I was expecting कि मुझे वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा. So this is one method that I teach all my students. Averages में बहुत ज्यादा काम आता है. Okay, guys, अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं ना, इन दोनों का एवरेज, तो वो क्योंकि these both are the same numbers, 75 75, मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, टोटल जो सेम होना चाहिए, इन दोनों का एवरेज विल बी आउट ऑफ देयर एडिशन. So 61% is out of 150. That is the way of averages. That is a simple trick with averages that I explain all my students. 61% इन दोनों का एवरेज है, so that will be out of 150. Similarly, ये 150 में से 61% है and ये 150 में से 66% है. So what I can do is वापस इन दोनों का डबल करके 300 का 63.5% हो जाएगा. 63.5% of 100 is how much? 63.5. So 63.5% of 300 will be 190.5. एंड बाद में इन दोनों का मैंने सिंपली ढूंढ लिया मार्क्स. 100 का 76% is 76, तो 50 का कितना हो जाएगा? 38. एंड 55% of 200 by the same logic will be 110. So that is how I get कि एंड में 8.5 आता है, एंड ऐसा अपने पास एक ही ऑप्शन है. अब समझा सबको? आई गेस संकेत, सोनी एंड यश, तुम्हें नहीं समझा था? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? सो या, दिस इज द काइंड ऑफ ट्रिक दैट आई टीच इन माय कोर्स. मतलब काफी ज्यादा काम आता है ये सबसे, काफी तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा. बाद में द लास्ट वन, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज स्कोर्ड बाय बी? आंसर इन अप्रोक्सीमेट वैल्यू. हितेश, तू मेरा ही स्टूडेंट है, तू क्यों इतना शॉक हो रहा है? सो या, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज स्कोर्ड बाय बी? सेम लॉजिक गाइस, सेम लॉजिक यूज करेंगे हम. विल डू द सेम थिंग. ओके, अब सुनो, और एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. ये देखो, ये 50 और 150 ना, 50 और 150, इनका डिफरेंस कितना है? हाउ मच इज द डिफरेंस? अगर मुझे इन दोनों का एवरेज ढूंढना है, अरे ऐसे नहीं रे सोनी, ऐसे नहीं, आई एम सेइंग ये 74 and 52, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 22, राइट?
22 का डिफरेंस है. सो व्हाट आई कैन डू इज मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ रेशियोज में. 22 एंड टोटल कितने टुकड़े हैं? दिस इज 1:3. सो टोटल कितने टुकड़े हो गए? देयर विल बी 4 टुकड़े ना. देयर विल बी 4 पीसेस ऑफ इट एंड 50 इज पुलिंग. देखो दोनों साइड से क्या होता है, 50 will also try to pull the average towards itself and 150 will also try to pull the average towards itself. वो जिधर है उधर. तो इन दोनों के एवरेज कैसे हम निकालेंगे? जितना भी डिफरेंस है ना 22 डिवाइड बाई 4 करेंगे, उसमें से 3 टुकड़े देंगे 150 को एंड 1 टुकड़ा देंगे 50 को. तो एवरेज कितना हो गया? 5.5. डू यू अंडरस्टैंड? तो 5.5 इसमें से मैं इधर 3 टुकड़े ऐड करूंगा. अंकित यू आर रॉन्ग, 57% नहीं आएगा. अंकित यू आर रॉन्ग. मैं 3 टुकड़े इधर दे दूंगा एंड 1 टुकड़ा इधर दे दूंगा. समझ रहे हो? सो दिस विल पुल इट मोर टुवर्ड्स दैट. तो इसमें से हम माइनस करेंगे. कितना माइनस करेंगे? 16.5, क्योंकि 3 टुकड़े वो खींच रहे हैं ना. सो 16.5 और 5.5 मोर देन दिस, तो 57.5. 57.5 विल बी कितने का एवरेज? 200 का एवरेज. समझ रहे हो? 200 का एवरेज विल बी 57.5. डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस मेथड? हाँ गाइस, सबको समझा है नहीं? बाद में यस ट्विंकल, ये लाइन मेथड जैसा है, ये अपनी लाइन मेथड जैसा है. नाउ 200 200 57.5 एंड 49 कितना आ जाएगा? दोनों के बीच में आ जाएगा. हाउ मच विल इट बी? हाउ मच विल इट बी? बोलो. 57.5 एंड 49 डिफरेंस कितना आ गया? 8.5. 8.5 के बीच में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली. दैट विल बी हाउ मच? 4.25. 4.25 प्लस दिस, तो 53.25. 53.25 out of 400. 53.25 out of 400. एंड इधर देख लो, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? 66 out of 150. तो कितना आ जाएगा? 66 प्लस 9, तो 99 हो जाएगा टोटल मार्क्स. एंड इनका 400 में से मतलब कितना आ जाएगा? इंटू 4 कर दो इसको, 213. सो नाउ सिंपली यू हैव अ टोटल देख लो, 2 3 2 32 19. हाँ गाइस, हाउ मच विल बी द टोटल? 312. अब 312 टोटल में से निकाल दो. 150 150 300 500 550 डिवाइडेड बाय 550. इफ यू आर फास्ट विथ योर कैलकुलेशंस तो ये सब सॉल्व करना बहुत इजी है. ये अप्रोक्सीमेटली 60% से जस्ट थोड़ा कम होगा. इसका 60% कितना हो जाएगा? 330. तो ये 60% से जस्ट कम होगा. दैट विल बी 57. और दैट इज हाउ यू अप्रोक्सीमेट. मैंने एक्चुअली ढूंढने नहीं बैठा. मैंने क्या बोला? इसका 60% विल बी 330 एंड वो 330 से थोड़ा ही कम है. सो दैट इज हाउ मच? 57%. समझा सबको गाइस? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? Great. So yeah, now guys, I have a announcement for all of you. We are done with the sums for today. Now I'm gonna make the announcement. I have an announcement for all of you. So I had this request from the students who wanted to enroll. So I said that I have grouped enrollments, right? So the students were like, sir, please try for a flash sale, and I got a lot of messages for that. So I'm going in for a flash sale that is on 2 दिन बाद, that is 22nd. 22nd ko there will be a flash sale on my website. You can use the code. I'm going to give you the code right now. The code, okay, I'll type it out for you guys. And for people on YouTube, you can see it on my screen here. The code will be flash 22. Okay, flash and that date, flash 22. And the discount is basically you all will get 1,000 rupees off on my package 1. So whoever wants the package 1, you will straight away get a 1,000 rupees off on that. Okay. So this is something that
I'm doing to help the students because they really asked for it. I really wanted to help the students out as much as possible. So yeah, that's the announcement that I really wanted to make. Apart from that, are there any doubts that you guys have for approximations, for any other doubts that, or any other doubts? Okay, how to increase the speed? I'm only able to solve 120 to 140. Gajanan, you are not solving by tricks. अगर तुम ट्रिक से सॉल्व करो then trust me your speed will increase a lot. Twinkle, you are in the meeting right till now? Are you there, Twinkle? Twinkle, if you are in the meeting, please speak up. Jigar, you can contact me for that anytime. Like you can contact me. Azhar, yeah, even Azhar is a student. Azhar, can you please speak up? Unmute kar dena, Azhar. अच्छा, विपुल तू इतना फुकट है क्या? हमेशा आ जाता है. विपुल है, हितेश है. So yeah, Hitesh, you can also talk up. Then there is a Mayur, I can't help you with that. I'm really sorry about that. But yeah, that's the best that I can do. Okay, I'll open the chat to everyone. Yeah, the chat is now open for everyone, so you can just send a message to everyone. Okay, Ankit, good question. Time-wise breakup. Okay, guys, this is a very common question. कि time-wise breakup कितना होना चाहिए for CET for all sections? Whenever I hear people saying कि ये section को इतना time दो, ये section को इतना time दो, I call absolute bullshit on that. I say कि वो सबसे बड़ी फालतूगिरी जो तुम लोग कर रहे हो. As students, as CET test takers, don't confine yourself. Everybody has different strengths. Everybody. So I have one student who is Lucky. Lucky is really good with maths. उसका पूरा maths का section मुझसे भी fast हो जाता है. He is in fact better at calculations than I am. So he solves maths in shorter amount of time than I do. मुझे मैथ्स के सेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 30-35 मिनट्स लगते हैं, जिसमें मैं आराम से 30-35 मार्क्स निकाल देता हूँ. वो बंदा 40 मार्क्स निकालता है इन 25 मिनट्स. सो ही इज गुड विद मैथ्स. एंड सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये सेक्शनल टाइमिंग्स का लोचा है ना, भूल जाओ. डोंट गो आफ्टर ऑल ऑफ दिस. आई बिलीव दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि सेक्शनल इतना टाइम दो, ये सेक्शन को इतना टाइम दो, बट आई एम टोटली अगेंस्ट दैट. ओके, एनी अदर डाउट्स? Yes, Mahesh, there are section wise packages. You can go on my website, and on my website you can easily find all the packages. Go to the packages section. Shubham Matre is asking everyone. Shubham Matre asks कि if you fumble in start of the mock test, then पूरा mock खराब जाता है. Shubham, you fumble in start of a mock test because you are unprepared. If you are prepared, if you are taking mocks regularly, if you are using different strategies, then trust me, तो mock में कभी start में fumble नहीं होगा. That's something that many of my students have gotten out of. मतलब पहले उनका भी बहुत लोगों का वैसा होता था, but now they are getting out of it. कि यार मतलब कैसे ये start में fumble होने का डर निकालना है. It's something that is really not difficult. Ankit, in my course, I've given more than enough resources for practice. बहुत सारे resources है practice के लिए. So I don't think अभी तक कोई भी student ने सारे resources खत्म किए हैं. So that is, I guess, enough. सागर, week में कितने marks देने हैं? That depends on your mock score. सागर, tell me your mock score. तुम्हें marks में कितने आ रहे हैं? Okay, 102. I suggest you take 2 mocks a week. So for everyone scoring less than 100, 1 mock a week. 100 to 120, 2 mocks a week, and 120 plus, take 3 mocks a week. Gajanan, I already have a complete video on how to analyze mocks. That is in my course. That's a 1.5 to 2 hour long video. And I also have an analysis sheet that really helps out students. But just
looking at the analysis sheet will give you literally nothing. You need to understand कि analysis sheet को read कैसे करना है. That is what I teach in my course. Stuck at verbal 20 marks only. What should I do to improve score by 5 to 10 marks? Priyesh, अगर तू English में बस 30 marks aim कर रहा है, then trust me, your aim is less. You have to aim higher. Okay. So chalo guys. Anyway, yes, as I said, there is a flash sale on my website on 22nd. You guys can contact me before that also. I will try to work out something for you if there is some special case, or obviously if there are groups, then I would love to help you out as groups also. Chalo. Bye guys. Did you like the session though? Did you like the session? Chalo, I'm really glad you liked the session. Chalo, bye everyone. Also, if you are watching on YouTube, please, whatever, I'm just gonna say, if you have any more doubts, or if you have suggestions for the next videos, because I always have to keep thinking. So if you guys have suggestions for the next YouTube videos, then please drop it in the comments. That's gonna be really helpful. If you are in the session, तो YouTube पे जाके please आज रात को 9 बजे तक upload हो जाएगा. तो YouTube पे जाके please comments में डाल दो what are your ideas for the next session. It will be really helpful because घड़ी घड़ी सोचना पड़ता है. So I'll make whatever you guys say. Okay. Chalo. Bye guys.